हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर आसिफ अली और आज का हमारा टॉपिक द ग्रेट विजनरीज अजीम बसीरतमंद। अब ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है। जिस तरीके से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की 9th क्लास की बुक, तो वही सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं। तो ग्रेट विजनरीज असल में क्या मकसद क्या था इस चैप्टर को बुक में देने का, तो वो डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि विजनरी है क्या। Visionary is a person who can think about or plan the future with imaginations or wisdom. एक विजनरी उसे हम कहते हैं जो फ्यूचर के बारे में प्लान करे इमेजिनेशन के थ्रू या विजडम के थ्रू, अक्लमंदी के थ्रू, उसे विजनरी कहते हैं। जिस तरीके से इंटेग्रिटी, क्लियर गोल्स, गुड एग्जांपल्स, विजन, क्लियर कम्युनिकेशंस, एक्सपेक्ट द बेस्ट, support, encouragement, recognition, stimulating work, focus on team interest and needs, inspiration, ये सारी जो क्वालिटीज़ एक विजनरी में होती हैं। अब इस चैप्टर में किस तरीके से एक एक्सप्लेन किया गया है विजनरीज़ को। एक तो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने एफर्ट्स किए। और ये जो स्टार्ट होता है ना चैप्टर, वो एक टास्क से होता है। क्लास में टीचर बच्चों को टास्क देता है और एक ग्रेट विजनरीज़ के ऊपर लिखने के लिए, तो डिफरेंट टास्क बच्चे लेके आते हैं। ये बात बताता चलूँ कि ईमेल के तौर पे ये जो है ना टॉपिक्स बच्चों को टास्क में दिए गए हैं कि ईमेल कैसे बनानी है, तो चैप्टर को ईमेल के थ्रू समझाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी ईमेल बनाना आते हो, कहीं ना कहीं आपसे बोर्ड में ईमेल के बारे में पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके देता हूँ मैं आपको। रीडिंग टेक्स्ट द ग्रेट विजनरीज। The teacher assigned the class a project for the summer vacations titled The Great Visionaries. उस्ताद ने जमात को मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जिसका उन्वान था अजीम बसीरतमंद। The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of the Pakistan movement. तलबा को 4-4 के ग्रुप में काम करने और तारीख़ पाकिस्तान के 2 अजीम बसीरत अफराद रहनुमाओं कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात तलाश करने को कहा गया। They were asked to develop a booklet, a newspaper edition or any other form of visual presentation based on the collected information. उन्हें जमाशुदा मालूमात की बुनियाद पर एक किताबचा बॉडी एडिशन या किसी किस्म की बसरी नुमाइशी पेशकश बनाने को कहा गया। The member of one of the groups decided to split up the information gathering task. Huma and Tahir offered to look up information on some aspects of Jinnah's life, while Lubna and Farheen agreed to find information about Iqbal. उन गिरोह में से एक गिरोह के अरकान ने मालूमात जमा काम को तकसीम करने का इरादा किया। हुमा और ताहिरा ने जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ पहलू पर मालूमात तलाश करने की पेशकश की, जबकि लुबना और फरहीन ने इकबाल के मुतालिक मालूमात तलाश करने पर हामी भरी। They decided to share the information with each other through emails. Here are some of their emails. उन्होंने फैसला किया कि वो ईमेल के ज़रिए आपस में मालूमात का तबादला करेंगे। यहाँ उनके कुछ ईमेल्स जारी हैं। देखिए किस तरीके से एक ईमेल बनाया गया है। आपको भी ईमेल बनाने का तरीका आता हो, जिस तरीके से पहले आईडी होती है ईमेल की, अगर कि आपकी आईडी नहीं है तो आपको बनानी पड़ती है। उसमें हमें करना क्या होता है, एक तो टू होता है, एक फ्रॉम होता है। अब टू जिसे हम सेंड करेंगे और फ्रॉम जिसे ईमेल आएगा, तो ईमेल की आईडी आएगी या नाम आएगा आपके सामने। इस तरीके से आपको ईमेल बनाना आता हो। अब ईमेल टू फ्रॉम सब्जेक्ट आता है जिस तरीके से, फिर डेट आपने देनी होती है और सारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका नीचे काम होता है, फिर वो आप देते हैं उसमें। लाइक जैसे लिखा गया है, डियर हुमा, हियर इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायद आज़म। यहाँ कुछ मालूमात है जो मैंने कायद आज़म के बारे में तलाश की है। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स, शख्सियत और कामयाबियाँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ साउथ एशिया। कायद आज़म जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा मुतहरिक व मुस्बत शख्सियात में से एक हैं। हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन एंड हिज डिटर्मिनेशन एंड स्टीडफास्टनेस, if made the guiding principle by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity.
ان کے پیغام اتحاد ایمان اور تنظیم اور ان کی قوت ارادی اور ثابت قدمی، اگر قوم نے انہیں رہنما اصول بنایا ہوتا تو قوم کی نہایت تیزی سے ترقی و خوشحالی کے راستے پر ڈالا جا سکتا تھا۔ He was one of the top barristers of Bombay. وہ بمبئی کی بڑی وکیلوں میں سے ایک تھے۔ But his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. لیکن ان کا عظیم کارنامہ جو دنیا کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، پاکستان کی تخلیق ہے۔ The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesirable rulers, but few have achieved what the Quaid-e-Azam did. He created a new country. دنیا نے کئی رہنماؤں کو دیکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ حکمرانوں سے آزادی حاصل کی، لیکن ان میں کچھ ہی کو وہ حاصل ہوا جو قائد اعظم نے حاصل کیا۔ انہوں نے ایک نیا ملک تخلیق کیا۔ He led Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teachings of their faith and کلچر۔ انہوں نے ایک آزاد ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں حاصل کرنے کے لیے برے صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، جہاں وہ عزت اور اپنے دین کی تعلیمات و ثقافت کے تحت رہ سکتے تھے۔ ریگارڈز طاہرہ۔ دیکھیں سیم ہی پروسیجر دیا گیا ہے، اوپر آئی ڈیز دی گئی ہیں 2 میں جن کو سینڈ کیا جا رہا ہے، اور فرام سے ہما کی آئی ڈی دی گئی ہے، تو اس طریقے سے یہ ہما کا ٹاپک ہے۔ سبجیکٹ قائد اعظم ہے، ڈیٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے وہ بھی مینشن کیا گیا ہے، دین جو ورک ہے وہ نیچے دیا گیا ہے۔ طاہرہ Here is some more information that we can add in this section. طاہرہ یہ کچھ مزید معلومات ہیں جو ہم اس حصے میں شامل کر سکتے ہیں۔ Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. اس کے علاوہ محمد علی جناح برطانوی انڈیا کے رہنما تھے جو نہ صرف مسلمانوں میں مقبول تھے بلکہ دوسرے دین کے ماننے والے بھی ان کی نہایت احترام کرتے تھے، جس میں ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی شامل تھے۔ Due to his tolerance and acceptance of all faiths, and some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. تمام ادیان کے لیے ان کی رواداری اور قبولیت کی باعث کچھ ہندو رہنما جیسے گوکھلے اور مشہور ہندو شاعر سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کہا۔ بیسٹ وشز ہما۔ آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اب فرحین کی باری آتی ہے اور فرحین سینڈ کرتی ہیں اپنا اسائنمنٹ جو کہ 2 میں آئیڈیز لکھی ہوئی ہے، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اسے۔ ہما اینڈ طاہرہ، you might want to add this vital piece of information in this section. ہما اور طاہرہ تم اس حصے میں یہ اہم معلومات شامل کرنا چاہو گی۔ However, he was very clear about one thing. While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice their teachings of their faiths and to prosper economically, this is in no way mean that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. مزید یہ کہ ایک چیز کے بارے میں انہیں کوئی شک نہ تھا، پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آزادی اور مالی طور پر خوشحال ہوں۔ اس کا کسی طرح یہ مطلب نہیں کہ دوسرے یہاں کے لوگ جو اس نئی ریاست کے جغرافیہ حدود کے اندر رہائش پذیر ہوں گے کسی طرح بھی کم درجے کے شہری ہوں گے۔ فرحین وہی سیم پروسیجر دیا گیا ہے 2 from subject date. Then thank you Huma, I agree with you. Now here is some more information about him. شکریہ Huma، میں تم سے متفق ہوں، اب یہ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہیں۔ Political acumen and contribution، سیاسی فراست اور حصہ۔ Initially, Quaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. شروع میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سرگرم رکن تھے۔ But as an outstanding political leader, he very soon sensed
that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. लेकिन एक गैर मामूली सियाह रहनुमा की हैसियत से उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े सगीर के हिंदुओं की रहनुमाई हिंदू मुस्लिम तफरीक की जानिब कर रही है. This he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. उन्हें एहसास हुआ कि इसका नतीजा इलाके में मुसलमानों की सियासी और मुआशी निशाना बनने लगेगा. Therefore he decided to leave the Congress and join the Muslim League. इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए. Soon after joining the Muslim League, he became its president. मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद जल्दी आप उसके सदर बन गए. He very intelligently pleaded the case of the separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. उन्होंने बहुत दानिशमंदी से मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मामला उठाया और पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. ये सब बरतानवी इंडिया की दो बड़ी ताकत के खिलाड़ियों अंग्रेज हुक्मरानों और हिंदू अक्सरियत की शदीद मुखालफत के बावजूद हुआ. Have you found some more information, ताहिरा? क्या तुमने कुछ और मालूमात ढूंढी, ताहिरा? इस चैप्टर को फिलहाल के लिए इतना ही कवर कर रहे हैं. मजीद इस वीडियो को कंटिन्यू हम पार्ट 2 में करेंगे. मजीद ऐसी वीडियो